Dear children, welcome to today's online class. In previous class, we have seen chapter 5, that is understanding elementary shapes. In that we have seen about angles, and that all we have completed. And also you have got the questions for revision for midterm exam. Now today we are going to see chapter 6, integers. Integers. First of all, before understanding integers, you should know what are natural numbers, whole numbers and negative numbers. So for all these things you have already studied and written also in your copy. Natural numbers start from 1, 1 to 3 and so on. Whole numbers starting from 0. 0 is also whole number, and including 0, all the natural numbers are called as whole numbers. And negative numbers, when you write minus sign in front of these natural numbers, they becomes the negative numbers. So one line is there over which all these numbers, all the negative numbers, all the positive numbers and 0 are coming. That is called as number line. And all these numbers, including negative numbers, positive numbers and 0, they are called as integers. So integers are including all the negative numbers also, positive numbers also and 0 also. 0 is also a integer. Now 0, you don't have to write any positive or negative sign. It is just written as 0. So all the negative numbers 0 and all the positive numbers are called integers, and this number line already just now I have explained once again. Previously also you have understood this and written in your copy also. Now the main thing in that is when you move from left side to the right side, as you can see from 0 to 5 you can understand 0. After that 1 is coming, after 1 2 is coming, after 2 3 is coming, means you are moving right side. Okay, so 2 is greater, 1 is smaller, so the numbers to the right side is always the greater number, and the number to the left side of any number is always the smaller number. This much you can understand while seeing these positive numbers 0 to 5. Okay, now when you go to the left side, they are the negative integers. When you see, just before 0 minus 1 is written, and just before minus 1 minus 2 is written. So when you compare minus 1 and 0, 0 is written at the right side and minus 1 written at the left side. So 0 is greater and minus 1 is smaller. So you can say all the negative integers are smaller than 0, and they are also smaller than all the positive numbers. All the positive numbers are always greater and negative numbers are always smaller. 0 is greater than the negative integers and 0 is always smaller than the positive integers. This much you have understood. Now if any question comes, it can be any other number also, any greater number also. For example, minus 50 if I ask. Before that, let you understand the successor and the predecessor. Successor means plus 1. Plus 1 when you do. Success means going upwards. सक्सेस मिलती है किसी चीज़ में, मतलब ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सक्सेसर्स. मतलब प्लस 1 करने से सक्सेसर मिलता है और माइनस 1 करने से प्रेडिसेसर मिलता है. तो प्रेडिसेसर मतलब उसके पहले वाला और सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला. तो इफ़ आई एम आस्किंग अबाउट सक्सेसर ऑफ माइनस 50, सक्सेसर ऑफ माइनस 50, तो माइनस 50 से अगर हम माइनस को भूल जाएं तो उससे एक कम, जैसे जस्ट यू लुक एट दिस नेगेटिव इंटीजर्स माइनस 5 एंड माइनस 4. 5 और 4, 5 से छोटा होता है 4, बट इफ़ यू राइट माइनस साइन इन बोथ, दोनों में अगर माइनस साइन लिख देंगे तो माइनस 5 छोटा हो जाएगा और माइनस 4 बड़ा हो जाएगा. इन द सेम वे इफ़ आई राइट माइनस 50, सो माइनस 50 इज स्मॉलर एंड माइनस 49, 50 के पहले 49 आता है तो माइनस 49 विल बी स्मॉलर. So predecessor of minus 50 is minus 49 and successor of minus 50 is
sorry, successor of minus 50 is minus 49 and predecessor of minus 50 is minus 51. Understood? Just you draw roughly. If such kind of question if comes in exam, you roughly draw this number line. उसमें छोटा सा जस्ट लिख लोगे, खाली उतना ही रेंज का, पूरा नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लाइक सपोज 50 इज आस्क्ड, 50 उसके सक्सेसर मतलब राइट साइड वाला बनाएंगे. तो 50 के पहले 49, 50 के पहले 49 यहाँ पर आएगा. तो 49 विल बी सक्सेसर एंड माइनस 51 विल बी प्रेडिसेसर. सो अंडरस्टूड दिस सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. नाउ about that zero, negative and positive already just now I have told, and any number right to the other is the greater. just now I have told right side वाले numbers हमेशा बड़े होते हैं और left side वाले number हमेशा छोटे होते हैं. This I am talking in Hindi so that you can understand, because this is just a revision going on just before the exam. These are the exercises questions which you have already written in your copy and I have explained also. So again no need to explain these things, and moreover question is not here, only solutions are here. This kind of number line questions, if it is asked, you just do that. If minus is written you have to go to the left side, and if plus is written you have to go to the right side. That is also written in the question what you have written in your notebook. Then next thing is that when the two signs are coming together, this also I have explained you in the beginning, that similar type of sign, that is minus minus, माइनस माइनस सिमिलर एक जैसे हैं, तो उसके लिए प्लस लिखने के लिए प्लस, प्लस साइन एडिशन करने के लिए प्लस करते हैं हम. ओके, एंड डिफरेंट साइन, एक प्लस एक साइन प्लस और एक साइन माइनस होगा, अलग अलग टाइप के साइन होंगे, तो माइनस साइन लिखेंगे. ओके, एंड ऑल्सो ऑपरेशन ऑल्सो वी विल डू इन द सेम वे. माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, और सिमिलर साइन है जैसे माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस भी प्लस होगा. बट आंसर, उसका जो आंसर आएगा उसमें हमेशा बड़े नंबर का साइन डलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू आर हैविंग द एग्जाम्पल, हियर इफ you can see this example, minus 2 minus 4. If only this much you see, minus 2 minus 4, minus 2 minus 4 similar sign, so minus minus plus, so operation we are doing addition, so 2 and 4 6, answer 6 we have written, and greater number is 4, so minus is, it is having minus in front, so minus 6 we got here, and then remaining is plus 8, so plus 8 we have written. And this is just we have interchanged the digits and we have done. Otherwise also you can do, that is 8 minus 6, that is 2. And here you can see, yes, this one, minus 250 plus in bracket 150. Okay, minus 250, when you open the bracket it is minus 250, and for opening the bracket plus 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 similar sign plus, so it is plus 150. now for operation, मतलब कैलकुलेशन क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ये समझने के लिए भी हम वही रूल फॉलो करते हैं. व्हाट, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन वी आर गोइंग टू डू हियर. नाउ 250 minus 150 is 100. okay, 100 we have got the answer. now to put the sign, अब साइन कौन सा डलेगा, उसके लिए हम बड़ा नंबर देखेंगे. 250 और 150, इन दोनों में से 250 बड़ा है तो माइनस साइन है उसके आगे, तो हम आंसर में माइनस साइन डाल दिए. अंडरस्टूड? दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंटीजर्स.
So all these things you have already written in your copy, and all the rough part, what we are doing, what kind of calculation we are doing, everything I have written in the copy, and the PDF you have got, which you have written in your notebook also. All the exercises, questions also I have given. And this greater is smaller, yes, this one. If direct number is given, then also you might be knowing, just like in the number line just before, in the starting I have told you, if anything like this, it is given in the form of some number addition subtraction, that you do and find out one answer, one number you should get, only one number. This like this whole मीन्स प्लस माइनस ब्रैकेट, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ एक नंबर तक उसको कैलकुलेशन करके आंसर लेकर आओ, देन ओनली यू कैन पुट द साइन ग्रेटर देन स्मॉलर देन. नाउ ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर. So in that way you can put the symbol greater, smaller. And when both are having negative sign, here you can see, when both are having negative sign, जब दोनों में नेगेटिव साइन होगा तो जो नंबर बड़ा होगा वो माइनस के साथ में छोटा बन जाता है. और अगर दोनों में माइनस साइन है तब की बात कर रहे हैं, जब दोनों में माइनस साइन है तब. अगर माइनस को भूल जाएं और जो नंबर बड़ा है, तब जो नंबर बड़ा है वो माइनस के साथ में छोटा हो जाता है. या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझो कि नंबर लाइन पर ये लेफ्ट साइड में रहेगा, इसीलिए ये छोटा रहेगा, और राइट साइड में जो नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, इसीलिए हियर -11 इज ग्रेटर एंड -42 इज स्मॉलर. ओके, देन ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी रिटन. एंड लाइक दिस, when you will get 0, 1 is -8. If you are writing different sign, same number, then only you will get 0. So here -8 plus 8 0, plus 13 -13 0, plus 12 -12 0. So this kind of questions you just practice. Then along with this you are getting one PDF of revision questions also of chapter 6. Then dear children, daily you do the practice so that quickly you can complete the revision of all the chapters, because you do not have much time.